Hello students, today we'll start that is your lesson 2 motions. Before start with this lesson, so you know what is rest. A rest and motions are two different words है जो इसका opposite बोल सकते हैं. मोशन का opposite है rest. Then what is rest? A body is said to be rest if it does not change its position with respect to a fixed point on its surroundings. जब एक बॉडी एक ऑब्जेक्ट्स क्या करता है अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं ये रेस्ट में है. Examples, what is that examples of rest? A book lying on the table, a bench fixed under a tree. This is good examples of a rest. Therefore, it is clear when the position of the body with respect to its surrounding does not change with times, the body is said to be at rest. Okay, rest. I hope this is clear. Then motion, ये टॉपिक है मोशंस. ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी इन मोशंस. मोशन का डेफिनेशन हम लोग क्या दे सकते हैं? ये बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग. ये बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है तो सराउंडिंग का हिसाब से. एग्जाम्पल ऑफ मोशन, ए फ्लाइंग बर्ड्स, ए मूविंग बस, ए वॉकिंग बॉयज. दिस इज गुड एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन. ओके, एंड here in fact देखो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. हाउ रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव टर्म्स? ये कैसे रिलेटिव टर्म्स हो गया? We can say an object is in motion with respect to a set of objects, but at the same time it may be in a state of rest with respect to other objects. तो एक एग्जाम्पल देती हूँ तुम लोग को. सपोज यू आर स्टैंडिंग near the station. We are standing stations inside the stations. That times you saw a train is moving. A train is moving. You are standing in the platforms. The train that times you think that is train is moving, but inside the train who is sitting or the passenger is thinking you are moving back of the back side of the trains. पैसेंजर क्या सोचता है? ये तुम जो खड़े हो बाहर में जो खड़े हो वो पीछे जा रहा है. ये ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर है वो कांस्टेंट है. ओके, देखो ये वाला क्या होता है? रेस्ट एंड मोशन. हम लोग को फ्रेम रेफरेंस के हिसाब से पता चलता है. हम लोग बोल सकते हैं ये मोशन है, मैं रेस्ट हूँ. ऐसे देखो स्पेस में कोई गया, मून में गया तो स्पेसमैन क्या सोचता है? जो अर्थ में जो थिंग्स है दैट इज बिल्डिंग, ट्री, ये सब मूव कर रहा है. बट व्हेन यू आर इन द अर्थ दैट टाइम्स यू आर थिंक इट इज़ कांस्टेंट. हम लोग कांस्टेंट है. तो नाउ यू नो द रेस्ट एंड मोशंस आर दैट इज आर रिलेटिव टर्म्स. तो इन योर बुक्स, तो according to your books you will read that what types of motions. First is translated motions. What is translated motions? If an object move in a line in such a way that every point of the objects move through the same distance at the same times, the motion is said to be translatory motions. ये ऑब्जेक्ट एवरी पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू ए सेम डिस्टेंस एट द सेम टाइम सेम डिस्टेंस में जो ऑब्जेक्ट्स मूव करता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटर मोशंस. इफ एनीबॉडी इज आस्किंग गिव एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेटर मोशंस, तो यू कैन से दैट बॉय स्लाइडिंग डाउन ए स्लोप, ए ball rolling down on ground, a bullet fires from rifles, falling off a stones, that is match parts of soldiers. This is example of translator motions. Again, that is translator motion is two types, that is rectilinear motions, another curvilinear motions. What is rectilinear motion? Simple rectilinear motions, the motion which is along a straight lines is known as rectilinear motion. Example, fruits falling from a tree, a car moving on a straight road. This is example of rectilinear motion. The curvilinear motion, if an object move along a curve or circular path, its motion is known as curvilinear motions. A stone thrown from the roof of a building or a car moving along a curved path. Remember that is translator motion is two types. One is rectilinear motion, another curvilinear motion. Rectilinear motion that means straight line motions, and curvilinear motions that motion is curve or circular path motions. Number 2, rotatory motions or circulatory motions.
रोटेटरी मोशन देखो, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एलोंग ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलेटरी मोशंस। और क्या बोल सकते हैं, अनदर डेफिनेशन दे सकते हैं, इफ इट मूव्स अबाउट ए फिक्स एक्सिस विदाउट चेंज इट्स रेडियस ऑफ इट्स मोशंस, दैट इज नोन एज rotatory motions. Example of rotatory motions: motion of the moon around the earth, a ball moving around a central poles, motion of a potter's wheels, motion of a fans. This is examples of rotatory motions. Then number 3, that is oscillatory motions. Oscillatory motions, to and fro motions of an object is known as oscillatory motion. To and fro, simple, don't confuse, this is to and fro motions. Oscillatory means ये to and fro motions, ये आगे पीछे जो जाता है वो oscillatory motion है. True and fro motions is known as oscillatory motions. Example of oscillatory motions: motion of the pendulums, when the beating of the drums. This is oscillatory motions. Periodic motions: the objects repeat its motion after a fixed intervals of times. These are the examples of periodic motions. That is, earth revolves around the sun, ये पीरियोडिक मोशन. नीडल ऑफ द स्विंग मशीन, ये भी पीरियोडिक मोशन. दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशंस. मूविंग ऑफ द movement of the pendulums, that is also periodic motions. Why? ये भी तुम लोग को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये ऑसिलेटरी मोशन है. अभी बोल रही हूँ ये पीरियोडिक मोशन है. क्योंकि पीरियोडिक मोशन है, ये क्या है, फिक्स इंटरवल्स ऑफ टाइम में ये मूव करता है, इसलिए ये motion of the pendulum also a periodic motions. Then number 5, random motions. What is random motions? The motion क्या है, simple. The motion which is the body keeps on changing the direction is known as random motions. Motion of the molecules is known as random motions. ये क्या है, चेंज randomly ये अपना पोजीशन चेंज करता है, that is random motions. Non-periodic motions. Non-periodic motion, simple. Periodic motion का opposite है non-periodic motion, which is not periodic motion, that is non-periodic motion. Example of non-periodic motion: motion of a moving car, motion of a bicyclist, ball falling down an inclined plane, swing of our arms or legs, beating of our heartbeat, and the motion of our lungs during breathings are repeated but not exactly periodic, are considered as non-periodic motions. Okay, this is non-periodic motions. Okay, तो आ जाओ the simple pendulums. What is simple pendulums? A simple pendulum consists of a metals ball suspended by a long thread from a rigid support such that the bob is free to swing back and forth. जो ये देखो सिंपल मोशन, तुम लोग का क्लॉक का जो पेंडुलम है ये याद कर सकते हैं. ये क्या है, ये बॉब है, ये थ्रेड है, ये फिक्स पॉइंट में हैंग है. ये है सिंपल मोशन, दैट इज सिंपल पेंडुलम्स. सिंपल पेंडुलम्स, ये सिंपल पेंडुलम से सिंपल ये बॉब है, मेटल बॉब हो सकता है, ये थ्रेड है, ये रिजिड सपोर्ट से हैंग है. ए सिंपल टर्म रिलेटेड टू सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम के लिए सम टर्म्स रिलेटेड है. लेंथ ऑफ द पेंडुलम्स, लेंथ दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ टू द सेंटर ऑफ बॉब इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम्स. ये जहाँ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहाँ सस्पेंस हुआ है तो अप टू कहाँ तक है, दैट इज बॉब तक है. द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ द बॉब is known as the length of the pendulums. Okay, in other words, the length of pendulum is the length of the thread plus the radius of the bob. ये length of the thread होगा और center of the bob, that means radius of the bob, that is length of the pendulums. Oscillations, one complete to and fro movement of the pendulums bob is called an oscillation. To and fro, ये to फ्रो मोशन करता है, फ्रो मोशन. टू एंड वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन को ये ऑसिलेशन होता है. जैसे वन ऑसिलेशन कैन बी काउंटेड स्टार्टिंग फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ द बॉब्स और फ्रॉम द सेंट्रल पोजिशन, दैट इज मीन पोजिशन. ए मोशन ऑफ ए पेंडुलम बॉब्स फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजिशन
B to C and back to B is called one oscillation. ये क्या है, ये स्ट्रिंग पोजिशन तक जाएगा A to C, फिर आएगा ये तक, फिर जाएगा B तक, ये दैट इज oscillation, one oscillation. The motion of the bob from the its central position A to B, then from B to C, then back A is known as one oscillation. ये सिंपल देखो, ये जाता है A to स्टार्ट करता है B, फिर आ गया फ्रॉम B से आ गया C तक, फिर C तक आ जाएगा A तक. दैट मीन्स ये जहाँ स्टार्ट किया था उधर तक आने से वन ऑसिलेशन होता है. नेक्स्ट पीरियड में मैं तुम लोग को और जो है सिंपल पेंडुलम्स का उसको मैं पढ़ाऊँगी. ओके.